Hi everyone, my name is Sandeep and welcome to another episode of the Cavitation Lab. So today we are going to discuss about medical ultrasonic cleaners, especially for those hospitals which have under 100 beds of occupancy. So this video is going to be beneficial for the doctors, biomedical professionals, medical students, the surgeons and also the procurement and purchase team of various hospitals. तो अगर आपको ये नहीं पता कि एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर हॉस्पिटल में क्या करता है, then let me brief you. An ultrasonic cleaner is a product that is used to disinfect, clean and sterilize surgical instruments. Basically, this is that one product that makes your surgical instruments autoclavable ready. Ultrasonic cleaners are a way of infection control. Surgical instruments carry a lot of biomedical hazards in the form of blood and organic debris. You see, nosocomial infections in hospitals or hospital-acquired infections are technically very hard to prevent. In such situations, washing and disinfecting your medical products and your surgical tools with the help of an ultrasonic cleaner is the best proven method that can do infection control in your hospital. Hospitals में cross contamination को prevent करने के लिए medical trays and surgical instruments को wash करना बहुत ज़रूरी होता है. Especially invasive instruments like laparoscopic instruments that are very hard to clean. In such cases, a good ultrasonic cleaner can come very handy. Normally for hospitals with under 100 bed capacity, I usually recommend a 22-liter ultrasonic cleaner, which is something like this. This is a single tank, tabletop, digital 22-liter ultrasonic cleaning system. This can be easily used in your OTs. The biggest advantage of choosing a 20+ liter ultrasonic cleaner for your hospital OTs is the size of the tank and the product basket. अगर आपके पास laparoscopic instruments है, then usually उनका size around 40 से 45 centimeters तक होता है और say about 17 to 18 inches. If you take a smaller machine, तो उसमें laparoscopic instrument fit नहीं होगा. When you go with the 22-liter model, it can easily accommodate all the laparoscopic instruments and even the smaller ones. Another big advantage of a 22-liter machine is the maneuverability. You can simply take it to another OT once the job is done. It is easier to clean, handle and to take care of. So now once you have decided that a 20+ liter machine is going to be beneficial for you, then how would you choose which one is the best one for you? क्योंकि मार्केट में 20, 22, 30, 50 हर साइज की मशीन्स अवेलेबल हैं और हर कोई आपको कन्विंस करता है कि हमारी मशीन बेस्ट है. वेल, आई एम नॉट सेइंग कि सारी मशीन्स अच्छी या सारी मशीन्स बुरी होती हैं, बट लेट्स सी सम एडवांटेजेस which you should have in such machines. I'll give you a short demo to explain you what to look for in a good 20-liter hospital OT tabletop portable ultrasonic cleaning machine. For the purpose of demo, we have already filled this 20-liter machine with approximately 18 liters of water. अब हम इसमें cleaning chemical ऐड करेंगे और cleaning chemical ऐड करने के बाद हम इस मशीन में एक फीचर यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं D-gas. सो एक D-gas फीचर यूज करने से हमने जो भी केमिकल इसके अंदर पोर किया है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, प्लस इस टैंक के अंदर जो ट्रैप्ड एयर और गैसेस हैं वो भी बाहर आ जाएंगी. मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एक D-gas फीचर कैसे काम करता है. So this is how the digital display of the ultrasonic tabletop machine looks like. If you can see, there's a heating option that shows that the machine is heated at temperature of 41 degree and the DEA is the D-gas option. I'm going to press that button and show you how this works. Now once the degassing process is over, the chemical is completely mixed with the water. Now we will use the product basket in which I have kept some surgical instruments and I'll place the basket inside the ultrasonic cleaning system. हमने इसमें 5 मिनट का टाइमर ऑलरेडी सेट किया है. I'll switch on the machine and show you how it works. So once the cleaning cycle is over, the machine will make an alarming sound telling the operator that now is the time to take the instruments out.
अब ऑफ कोर्स ये इंस्ट्रूमेंट्स उतने गंदे नहीं थे जितने एक हॉस्पिटल में होते हैं. दिस इज जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस, but this is how the machine is going to give you some results. So here are some quick tips before you make that purchase for the 20 plus liter ultrasonic cleaning machine for your hospital. Tip number 1, make sure that the machine comes with a degassing option. Obviously now for mixing the chemical and for releasing the trapped gases in the ultrasonic cleaner. Tip number 2, make sure that your machine comes with the power modulation. अब पावर मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी अल्ट्रासोनिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं. टिप नंबर 3, मेक श्योर दैट योर मशीन कम्स विद अ डिजिटल डिस्प्ले. और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेटर एक डिजिटल डिस्प्ले को ईजिली रीड आउट कर सकता है. उसमें कितना टेम्परेचर है, कितना कम है, क्या मशीन रेडी है या नहीं, एट्सेट्रा. टिप नंबर 4, अगर आपकी मशीन में एक साइकिल एंड बजर है तो वो ऑपरेटर को अलर्ट करता रहेगा कि आपकी मशीन का साइकिल टाइम कब खत्म हो गया है और पार्ट्स को कब बाहर निकालना है. टिप नंबर 5, योर मशीन यूजुअली कम्स विद दिस काइंड ऑफ top lid cover which should be used when the machine is not in use. It also comes with the power cable cord. अगर आप चाहते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरर आपको एक बीकर और ग्लव्स या आई प्रोटेक्शन दे तो इट्स अ गुड एड ऑन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, योर मशीन शुड बी सर्विसेबल. सो आस्क योर मैन्युफैक्चरर कि अगर इसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो व्हाट सर्विस सपोर्ट दे कैन ऑफर. आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. इफ यू हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हिच केमिकल टू बी यूज्ड, what should be the cycle time, how to do the maintenance of the machine, then you can put your questions on the comments below. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं या और कोई एडवाइस चाहते हैं regarding an ultrasonic cleaning system, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. I'll put my email in the description below. If you like this video, do give us a like and a thumbs up, and please subscribe to the channel to have some more information. In our upcoming videos, we'll also be sharing some ultrasonic cleaners which would be reasonably good for hospitals that have over 100 beds. Thank you for watching. Namaste.